Hello, everybody, and welcome to Growth Pod Talk Show. Today we have Mr. Arpan Desai with us, who is the co-founder of Mobile First Application. So, welcome, Arpan. It's great to have you on board. Uh, can you tell me how did you enter in this industry? ये मोबाइल फर्स्ट नाम कहाँ से आया और आप इस इंडस्ट्री में किस तरीके से आए? First of all, thank you for having me here, Shubham. And always pleasure having conversations with fellow industry folks. So uh, I'll start with my introduction first. So my name is Arpan Desai. I'm co-founder of Mobile First Applications. We started in 2014 as a software consulting and technology development company. We are now a team of 75 people focusing on niche verticals like fintech, legal tech, cloud operations, application engineering, those kind of things. Uh, Mobile first started with an idea of building mobile friendly products for customers. So back in those days, and I'll take a memory lane over here. Uh, Back in 2009, mobile phone or smartphones got introduced, and I was at that time at the verge of that disruption. So I started working on when iPhone 1.0 or iPhone first iPhone was there, and now we are using iPhone 15. So I've seen that journey, and at that time, uh, we decided that now every business, every industry need to think about coming to mobile as a platform first, and that's how we come up with an idea uh, of name that mobile first. Makes sense. So that takes me to the interesting question that we are right now living in a technology era. What do you think is the future of technology? I think future of technology, I'll divide in three parts. First is definitely AI. AI is here and it's gonna stay forever. Second is blockchain, because trust on a digital platforms can be invoked with blockchain. And third is cloud. So cloud is like everything, even your uh, even your phone, banking, everything is going on cloud. So I'll categorize these three things as a key growth areas in coming time. Correct. There is this one big question right now in the industry that when shall a company outsource their technology department and when shall a company have an in-house technology department? I think that's a very beautiful question. Uh, it's very subjective, but uh, we have been part of a lot of companies where their core strength is technology, then they need to have an in-house team. As an example, you are a startup building a next generation of a AI product. At that time, you cannot think of outsourcing yourself. But let's assume you are FedEx. Your business is shipping things from one point to another point. To start with, you can think of outsourcing your initial technology. But when you think of innovating faster, innovating better than others, that's where a agency or a outsourcing company comes in, and eventually you can bring things in house. Correct. So that takes me to a interesting question here that ऐसी कोई कंपनी जिसके लिए आपने रिसेंटली काम किया हो एंड यू हैव फेल्ट के वी हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन देयर ऑपरेशंस एज एन एजेंसी? Again, we always look for companies के जहाँ पे हम लोग impact first सोचे. So very recently we got an opportunity to work with one of India's largest consumer facing investment platform. This is government backed platform, and वो platform का technology बहुत पुराना था. So that's why government and end users were facing challenges, and that's where mobile first and our technology expertise come in. So we redesigned that platform to make it seamless. We redesigned that platform to have a fault tolerance which is less than 1%. We rethink that platform for masses, and now we are at that stage there we are able to see an impact on 8 crore to 10 crore users, and that's something we take immense proud
कि हम लोग कैसे 10 करोड़ लोगों का मे बी टाइम सेव कर सकते हैं, उनका ईज बढ़ा सकते हैं, हाउ वी कैन मेक इट देयर एक्सपीरियंस एट नेक्स्ट लेवल. So, and there are multiple other engagements where we got this opportunity, but this remains very close to our heart because it is impacting every spectrum of society. So, since you say that you have worked with such a big project, I would also like to know any of the clients that you really love to share, या फिर ऐसे clients जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे जिसके लिए आपने काम किया हो. Yes. So, I like the twist कि बहुत सारे clients हमारे होते हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते. But I would like to name a few. जैसे हम लोग ने फ्लिपकार्ट हेल्थ के साथ काम किया, हम लोग ने वॉक्सवैगन कोरिया के साथ काम किया. इट वॉज मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर अस बिकॉज हम लोग पूरा रीइमेजिन कर रहे थे जैसे उनके डीलरशिप्स वर्क हो रहे हैं. हम लोग ने वोडाकॉम साउथ अफ्रीका के साथ काम किया, हम लोग ने अरविंद लाइफस्टाइल के साथ किया. अनदर प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू अस इज़ अ स्पोर्ट्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग ने यूएस के NFL, NHL, मेजर लीग बेसबॉल जैसे टीम्स के साथ काम किया. At one point of time, we were working with New Zealand cricket team as well when they were facing Australia in World Cup finals. So, sports is one vertical we have worked a lot. Financial services के अंदर हम लोग ने काफ़ी सारे बड़े organizations के साथ work किया है. So, to name a few, these are some of our clientele. And also we are very fortunate enough to work with lot of emerging startups and companies. So हमारी कंपनी ने close to 60 जितने startups के साथ work किया है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने में काम किया, उनका फंडिंग के लिए हेल्प किया है, और मोस्ट रिसेंटली हम लोग ने अभी वो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट किया है. That's great. So I heard this one word fintech. So that comes up with a question कि fintech industry is equal to banking, ऐसा लोगों के दिमाग में आ गया है, और fintech industry would replace banking in the future. What is your take on it? So I think हम जैसे देख रहे हैं फिनटेक को, हम लोग सोच रहे हैं कि बैंकिंग इज अ एज ओल्ड बिजनेस, सालों से चला आ रहा है, वहाँ पे स्लो पेस इनोवेशन है. फिनटेक इज एन इनोवेशन एक्सेलरेंट फॉर कंज्यूमर्स एंड इवन फॉर बिजनेसेस. जैसे पेटीएम वॉलेट बना, दैट वाज अ इनोवेशन विच बैंक्स कुड नॉट क्रिएट. अगर हम लोग यूपीआई भी देख रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अ फिनटेक जिसने पूरा इंडिया जैसे पेमेंट्स और एक दूसरे से मनी मूवमेंट पूरा चेंज किया है. सो आज के डेट में फिनटेक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज बैंक्स और दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस बैंक्स, because fintechs are very dependent on banks. Fintech cannot operate independently, and they need to have a banks as their foundation pillars. But we see fintechs replacing or improving the way we are experiencing banking tremendously. So I want to take a one small example. हम सब जानते हैं SBI उनके लंच ब्रेक्स के बारे में, ठीक है, बट नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लंच ब्रेक्स बिकॉज नाउ यू हैव SBI योनो बैंक एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग दैट सीमलेस थैंक्स टू फिनटेक. Now in fintech we have heard one word जो अभी बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है, that's blockchain, crypto. So what is blockchain and what is the future of blockchain? So blockchain, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा यहाँ पे एक स्टेप बैक लेके समझाना चाहूँ. ब्लॉकचेन इज नॉट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो इज नॉट ब्लॉकचेन. सो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो वो ऑडिटेबल लेजर है, कि जिससे आप चेक कर पाते हो कि क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, और वो एक काफ़ी सिक्योर और ट्रस्टेड एक लेजर है. क्रिप्टो
एक करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है. कमिंग बैक टू नाउ योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि ब्लॉकचेन कैसे इम्पैक्ट करेगा. सो अभी हम लोग काफ़ी सारे फ्रॉड देख रहे हैं पेमेंट्स के अंदर. काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे सीमलेस पेमेंट्स नहीं है. सो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी विच कैन ट्रांसफॉर्म योर एनीथिंग रिलेटेड टू बैंक्स, फाइनेंस, लेंडिंग, पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वहाँ पे. सो इट हैज़ दैट पोटेंशियल. काफ़ी हद तक बोलूँगा मैं इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन businesses are very bullish on blockchain. They are building new use cases on blockchain. They are adopting blockchain with open heart and open hands. क्रिप्टो के लिए इंडिया के अंदर जैसे आपने क्रिप्टो में अगर हम लोग बोलेंगे बिटकॉइन, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और वो इतना रेडी नहीं है. एंड वेरी राइटली वो रेडी नहीं है बिकॉज इट कैन बी अ मैसिव प्रॉब्लम ऑफ terrorist funding, or it can create a massive problem with anti-money laundering. So, yeah. Great. So here comes a important question for SMEs. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डिजिटली अवेलेबल हैं जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बेस पर काम कर सकते हैं. सो व्हेन शुड अ कंपनी मेक देयर ओन सॉफ्टवेयर्स एंड व्हेन शुड दे यूज दीज रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री. सो बैंक्स जो है वो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं. अगर आपका कोई भी आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हैं तो यू आर पेइंग फीस फॉर दैट प्लेटफॉर्म, बट यू आर ऑल्सो पेइंग योर डेटा. एंड एज यू नो कि डेटा इज़ द न्यू करेंसी, डेटा इज़ द न्यू ऑयल. सो इफ़ यू आर वर्किंग और इफ़ योर इंडस्ट्री और if your business is dependent on that confidential data privacy, data security is very important, then you should always look for your own software. You should build or invest building your own software. But at the same time अगर कोई चीज़ जहाँ पे ऐसा business confidentiality का एंगल नहीं है तो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर ले सकते हैं. डोंट यू थिंक जो छोटी कंपनीज है जैसे आज वो लोग जो ERP सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, टेली जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फॉर देयर अकाउंटिंग पर्पसेस, now to create that is very expensive and to use those is very easy? So again मेरा पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि if you see technology as your differentiator over a 10 years period of time, then you will invest in technology. If you think technology is just an enabling you to do a business, what business you are doing. As an example हम लोग example देते हैं कि कोई mining के business के अंदर है. For them technology is not the differentiator. उनके लिए mining is their core business. So mining के अंदर वो उनको कितना innovate करना है वो सोचना है, नहीं कि technology tools के बारे में सोचना है. So that's in a broader level. I'll summarize कि do you see technology as your ultimate decision maker or ultimate differentiator? Then you should invest in technology. Great. So now Arpan, we will be shifting towards a rapid fire round where you will get exactly 10 seconds to answer the questions. Okay. Let's get started. Yeah. One platform that you follow regularly. Hacker News. Hacker News is a Y Combinator news platform and I love it. It is very geeky, but I love it. Great. iOS or Android? iOS. So I started my career with iOS. Big fan of Steve Jobs. Has his everything in my cabin or in my notebook. One technology that will grow by 2030? I think it should be AI. Blockchain or Neuralink? I'll say blockchain because use cases are immense and we have just started. Who is a better leader, Elon Musk or Jeff Bezos? I think Elon Musk. I'm huge fan. Speed of execution is the only key. How do you define your team? Techno nerds or creative bugs? I think both, but I'll say techno nerds because I'm a techno nerd. Thank you so much for your time, Arpan. It was a fabulous talking with you. And I hope we have understood how technology works and we will be looking forward to have mobile first in our team soon. Thank you so much. Thank you Shubham. Always pleasure talking.
सो कैन यू टेल मी कि आपकी अभी तक की मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन की जर्नी कैसी रही है एंड व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? सो हम लोग ने स्टार्ट किया था जब मैं प्राइसवाटरहाउसकूपर्स के अंदर जॉब कर रहा था, एंड इट वाज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क विद अ बिग फोर. वहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया, जस्ट टू ऑफ अस, स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल एंगेजमेंट्स with customers, and now we are working with unicorns of the world. We are working with NFL teams in the world. हमारा टीम भी 75 लोग का है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम. इट इज़ ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड, बट एट द सेम टाइम we we have good mix of people across the India, and we also now have an office in Bangalore, and we are starting an office in US. That's great. And what is your future plan? I think future plan में we are very much adopting AI at the stage. AI में हम लोग खुद का फ्रेमवर्क हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं जिससे AI एप्लीकेशन फास्टर और चीपर बन पाए. हमारा गोल है कि हम लोग SME को AI एक्सपीरियंस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें, सो दे स्टे कॉम्पिटिटिव इन द AI रेस. एट द स्टेज हम लोग ने लीगल, फाइनेंस, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, सभी के अंदर AI एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, एंड कस्टमर्स आर लविंग इट. हम लोग प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट अप टू 200 टाइम्स प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट देख रहा है. एरर रिडक्शन 90% इतना एरर रिडक्शन देख रहा है. सो वी आर वेरी बुलिश एज अ कंपनी ऑन AI disrupting fintech, legal, and insurance.